Now we know very well that efficiency of two different categories cannot be added. So या तो मुझे सबको मेल बनाना पड़ेगा या सबको फीमेल बनाना पड़ेगा, right? So it means that either I will have 4 women plus 4 women working for 12 days. This is when I take only women, or I will have 3 men plus 3 men working for 12 days. This is when I have only men. I hope all of you are clear till this step. No doubts anywhere. Great. So this is my work, which means my work is 8 into 12 if I'm considering only women, and my work is 6 into 12 if I'm considering only men. Now the question says that how much time would 5 women and 3 men together take to complete the same job? So I have to have 5 women and 3 men, and I need to know how many days will they take to complete the same job. Now again, I cannot mix the two efficiency. So either I should have only men or I should have only women. Now tell me this, what does your math say? Is it easy to have only men or is it easy to have only women? Only women. Men. Men. ओनली मैन रखना इजी रहेगा कि ओनली वुमेन रखना इजी रहेगा? मतलब Only women. मैन को रिप्लेस करना इजी रहेगा कि वुमेन को रिप्लेस करना इजी रहेगा? मैन को वुमेन में रिप्लेस करना मैन सर ये इजी रहेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि 3m इज इक्वल टू 4w, करेक्ट? तो मुझे ये 3m को डायरेक्टली 4w बनाने में ज्यादा आसानी है rather than ये 5w को men में बदलने में. I hope you understood, right? So you never decide based on कि किसको मतलब men को ही लेना है, woman को ही लेना है, nothing like that. तुम्हारा डिसीजन इस बेसिस पे है कि कौन सा आसान है बनाने में, ठीक है? So I will now replace this 3 men with 4 women. तो मेरे पास कितने लोग हो गए? 9 women हो गए जो D days काम करेंगे. Now because you have taken only women or these guys will work for D days, ये कौन सा काम कंप्लीट करेंगे? Do they complete this number 1 or do they complete this number 2? 9 women into D days, ये कौन सा काम कंप्लीट करेंगे? पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ. पहला वाला. स्थिति क्या बोलते हो? The first one. First one. Vishwasha, what do you say? The first one. Nandini, what do you say? First one. Okay, why do you all say the first one? Because it's women now only. Correct. We say the first one because we are considering only women in this category, and thus this work should be same as what 8 women do in 12 days. So that's why we got to equate it here. When equated here, WW cancels, and what is D value? 8 into 12 divided by 9, and what is that? कितना आता है 8 into 12 divided by 9? Third option. 5. 3 3s are 3 4s are 8 4s are 32. 32 by 3. 1 by half days. 32 by 3 is 5.5 days. 5 1 by 3. कैसे आया Sir, 5 1 by it's 3? 8 women and 12 days, right, sir? You have written 12 women. नहीं, it is 8 women in 12 days. Yeah, so 8 into 12 using woman is what I have written. फर्क नहीं पड़ता ना, मैं W डालूं, आगे डालूं, पीछे डालूं, कटना तो W को है ही. बोलते हैं ना, तरबूजे को छुरी में डालो या छुरी को तरबूजे में डालो. सो सेम, W को आगे लिखो या बाहर लिखो, पीछे लिखो, कटेगा तो W. तो क्या हो गया? D का वैल्यू 5 1 by 3 होता है क्या? नहीं ना, 10.6 आ रहा है सर. 10 समथिंग आएगा, तो मतलब none of these.
ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. ओके, किसी के घर पे कुछ चल रहा है? किसके घर पे चल रहा है नहीं मालूम, किसी के घर पे चल रहा है। ऑलराइट, संडे पार्टियां हो रही हैं, चलो ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस, great. This is where I want you to, I do not know how many of you are doing this, but this is where I want you to start doing it. I want you to read this question again, ठीक है? एक और बार क्वेश्चन पढ़ लो। If the output of 3 men is equivalent to that of 4 women who can complete a job in 12 days working together. Okay? मतलब 3 men and 4 women एक जॉब 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, they are completing the job in 12 days. Clear? Great. The question now is 5 women and 3 men together. So 3 men and 5 women कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? जब men बढ़ जाते हैं, when the men increase, what happens to days? Decrease. Sure? यहाँ पे एक लड़की को बढ़ा दिया मैंने, तो काम 12 दिन से कम ही होगा। I have increased 1 woman, right? So my job will happen lesser than 12 days. तो 24 days, 27 days मेरे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है? So one of these two. अब दूसरा सवाल, 5 1/3 मतलब ये आधा, राइट? 12/2 से भी 12/2 कितना होता है? 6. 6. कोई भी जॉब को आधा करने के लिए लोगों को डबल करना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई भी जॉब को आधा बनाने के लिए if I have to make a job half, I have to double the people. यहाँ पे आपने सबको डबल किया है? नहीं किया है। आपने एक लड़की को बढ़ाया है, तो मतलब आपका जॉब आधा नहीं होगा, है ना? तो मतलब 5 1/3 डेज भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? नन ऑफ दिस। खत्म कहानी। तो जहां पे मैथ यूज होता है वहां पे बहुत बार लॉजिक भी यूज होता है। तो आप जब भी सवाल whenever you solve a question using math, I will always suggest you go back to that question and see whether you can solve it in a very very common sense place. ये तो कॉमन सेंस का आंसर हो गया, राइट? लॉजिक एंड कॉमन सेंस का आंसर हो गया। इसमें मैथ की क्या जरूरत है? किसको मैथ की जरूरत है? मतलब छोटे बच्चों को बोलोगे यार एक चॉकलेट तुम 1 मिनट में खाओगे, 2 चॉकलेट कितने मिनट में खाओगे? वो बोलेगा 2, उसको खुद ही मालूम है, राइट? दैट इज अ कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस में सॉल्व हो जाता है। सो ऑलवेज go back to a question to see whether it can be solved through common sense. It is not that every question can be, but you will always find many questions which can be solved through that way. Okay, right. Next set of question. A group of laborers promised to do a work in 12 days. A group of people, आपको मालूम नहीं है कितना, तो आप हम लो X people. Okay, they promised to do a work in 12 days. मतलब आपका जॉब कितना हुआ? X into 12 is your total work. 12x. 12x is your total work. ठीक है? Now, but 5 of them do not turn up. 5 of them नहीं आए, तो आपके पास कितने लोग हैं अभी? X minus 5. X minus 5. All of you clear till here? अब ये X minus 5 लोग, if the rest of the group does the work in 18 days, तो ये X minus 5 लोग 18 दिन में वो जॉब किए जो ये 12x जॉब था, जो ये X लोग 12 दिन में किए, राइट? तो मुझे ये सॉल्व करना है। So what is this? 18x minus 18 into 5 is equal to 12x. एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, एक को राइट हैंड साइड ले जाओ। 18x minus 12x
6x is equal to 18 into 5. X is equal to 18 into 5 by 6. 15. 15. I hope all of you are understood here. Yes, sir. Okay. There are two things that there is one extra thing that you have to understand, which many of you did not understand. Okay. And I'm very much sure that you did not understand. क्योंकि मैंने समझाया नहीं, वो मैंने सिर्फ दिखाया था. If you see in this entire calculation, I never multiplied 18 into 5. ठीक है? Why? Because मुझे मालूम था कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा. जब चीजों को कटना ही है तो उसे जोड़ोगे क्यों? So there is no fun in doing 18 into 5 and then realizing अच्छा 5 9 90 लिखा और फिर 90 divided by 6 कर दिया और फिर 6 ones are 30 6 15 वापस आ गया. So basically the time that you will save in this place is the time you gain. Okay. So when you are solving equations, this is one important category that you have to remember, that when you're solving equations, do not add and multiply unless or until it is required for your solution. ठीक है? बहुत सारे चीजें अल्टीमेटली कट जाती हैं तो उसे वैसे ही टूटा हुआ ही छोड़ो, बाद में जोड़ लेंगे. समझ में आ गया? Yes. Right. So can I ask one thing? Now, ये किसने था? अर्पिता? Yes, please tell me. Why do you equate it with the? Arpita, your voice is breaking. I'm not able to hear you. Hello, Arpita, you're there? If you're there, can you type in your doubt quickly? Sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. Why did you equate the second equation is equals to 12x? Like, I don't understand. So, what was the work that you were supposed to do, Arpita? Group of laborers promised you to do a work in 12 days, right? So, the work that was promised to do is this 12x, है ना? Yes, yes. Right. अब इस 12x में से कुछ लोग, x में से कुछ लोग नहीं आए. कितने लोग नहीं आए? 5 लोग नहीं आए. ठीक है? तो अगर 5 लोग नहीं आए तो आपके पास कितने लोग बचे? x minus 5 लोग बचे. ये x minus 5 लोगों ने काम कितने दिन में किया? They did the job in how many days? 18 days. Correct? Arpita, you're clear till here? Yes, sir. Now tell me, the job that these guys have done, the x minus 5 people have done the job in 18 days. Which job are you talking about? कौन सा काम किया ये लोगों ने? Okay, the previous one. Yeah. ये लोगों ने वही काम किया था ना जो प्रॉमिस किया था आपको. 12 लोगों ने प्रॉमिस किया था या x लोगों ने प्रॉमिस किया था 12 दिन में करेंगे. तो इसीलिए हमने इक्वेट किया. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Thank you. All right, great. All right, I think that's the last question. Yes, the last question for the day. सबके चेहरे पे बड़ी खुशी है क्योंकि इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो अगला दिन दिया जाएगा, वरना एक और 2 घंटे की जरूरत पड़ेगी मुझे. So it says 15 men or 24 women means what? Work done by 15 men is equal to 24 women. और का मतलब होता ही वही है, right? And or 36 boys means I can remove 15 men, replace them with 24 women, or I can remove 15 men, replace them with 36 boys, or I can remove 24 women and replace them with 36 boys. कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें. Efficiency change नहीं होगा. So if 15 men is equal to 24 women is equal to 36 boys, first let me write down a breakup. Can I say 5 men is equal to 8 women,
which is equal to 12 boys. Can I make this statement also? Yes, sir. Yes, है sir. ना? Because I can Hmm. divide by 3 throughout and 3. bring this information. Okay. Now they are saying that 15 men can do a job in 12 days, or 24 men can do a job in 12 days, or 24. This is not men, Women. women. So 24 women can do a job in 12 days, or 36, let's say boys, 36. okay, can do a job in 12 days. तो ये मेरा वर्क हो गया. 3 डिफरेंट वर्क है 3 डिफरेंट लोगों के लिए. अंत में क्या है, तो अंडरस्टैंड दिस, बाय द एंड ऑफ इट सारे लोग वही काम कर रहे हैं, है ना? Hmm. लेकिन अलग अलग लोग कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग वर्क में डाला हुआ है. 15 लड़के हैं, 24 लड़कियां हैं, और 36 बच्चे हैं, बॉयज हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड there is also one more information. 8 Working hours. 8 hours a day. तो मतलब यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे और हैं दिन के. I hope all of you have understood till this statement. Okay. Now the question is, how many men must be associated with 12 women and 6 boys to do another work 2 times as great in 30 days, working 6 hours per day? तो अब ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. अब सवाल पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेन should accompany 12 women and 6 boys, ताकि ये सारे लोग ओके एक काम कंप्लीट करें 30 डेज में. इसको ऐसे डालते हैं, 30 डेज में 6 आवर्स पर डे के रेट पे. ओके, राइट. बिकॉज आई हैव डिफरेंट पीपल, आई कैन नॉट ऐड. सो क्या करना पड़ेगा मुझे? रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक आई शुड रिप्लेस? तुम क्या Boys. ढूंढ रहे हो? सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट आर यू सर्चिंग? Men. Men. Searching for men, correct? So if you are searching for men, you are not searching for days. पिछले वाले सवाल में देखोगे, यहाँ पे जब देखोगे तो आप डेज सर्च कर रहे थे. यहाँ पे डे क्या सर्च कर रहे थे आप? डेज सर्च कर रहे थे, राइट? यू आर सर्चिंग फॉर डी. लेकिन यहाँ पे इस सवाल में यू आर सर्चिंग फॉर मैन. मतलब आई हैव टू रिप्लेस बॉयज विद मैन, I also have to replace women with men, वरना नहीं होगा काम. Understood? So I have, let's assume I have X men. Now can you tell me 12 women is equal to how many men? 15. No. No. आधा. 15 का half. 24 women is equal to 15 men. So 12 women will be equal to 15 उसका का आधा ना. 7.5. 24 का आधा 12 होता है, तो 15 का आधा 7.5, right? 7.5. So 7.5 n plus how many boys? 2.5. 6 boys हैं तुम्हारे हाथ में. You realize that 12 boys is equal to 5 men, 2.5. 2.5. right? So if 12 boys are equal to 5 men, then 6 boys are equal to 2.5 men. Are we clear? Yes, sir. Right. So now total how many people, how many men you have? 10 plus X. 7.5 plus 2.5, 10 plus X 10 plus X. men है तुम्हारे हाथ में. ठीक है?
ये काम करेंगे 30 डेज के लिए, हर दिन करेंगे 6 घंटे। Are we clear till this step, all of you? Yes. 10 plus X men will work for 30 days and will work for 6 hours a day. And इतने काम में वो क्या कर रहे हैं? What are they doing in this job? They are completing twice the work that 15 men were doing in 12 days, working 8 hours a day. Did you understand this? Read the last statement. How many men must be associated with 12 women and 6 boys to do another work 2 times as great? मतलब जो पहले करते थे उसका दुगना काम, right? तो पहले वो कितने करते थे? How many? What was the work done by men earlier? Work done by men was 15 m into 12 into 8. Now you have to do twice that job, which means 2 times of 15 into 12 into 8. Am I right? Did you Yes, understand sir. this? Right? For example, if you have X money with you, I have twice of it. What does it mean? That I have 2X. 2x. Right? So if you are doing 15 into 12 into 8 as a job, and if I'm supposed to do twice of it, then I'm supposed to do 2 into 15 into 8, 12 into 8. So I have to find this X value. So again, do not multiply. See that I have not multiplied. So सबसे पहले 10 plus X को रखेंगे और ये 2 into 15 into 12 into 8 को के डिवाइड करेंगे 30 into 6 में. अब 2 into 15 is nothing but 30. 30. And 6 is 6 2s are 12, 2 8s are 16. So 10 plus X is 16. So what is X? 6. So none of these. Right. So the question is, how many men must be associated? 6 men has to be 6 associated. men. Answer option is none of them. Are we clear with this, guys? Sir, Yes. Yes, please. sir, if we are taking 12 days, so can we convert days into hours? You can. 12 into 8, 12 days into 8 hours a day is nothing but 96 hours. तो वही बात हुई ना कि अगर सीधा उसको उतने में ही करके लिखें. तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे? 12 into 8 वही होता है ना? बस ये है कि मैंने जैसे बोला था, मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये टूटेगा आगे जाके. वही. ठीक है. तो जब जब अनुष्का हमेशा देखो कि जब वैसे बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो आगे जाके टूटते हैं वो. तो इसलिए मल्टीप्लाई करके मत बैठो जब तक तुम्हारा फाइनल आंसर में मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़े. If your final options require multiplication, that's the time when you will multiply. Till then, always try to carry it forward, because somewhere it will disconnect. It will get eliminated. Okay? Yes, sir. Otherwise, ये होगा कि you will do 12 into 8, which is 96. Then you will do 96 into 15, जिसके लिए आपको कम से कम 30 seconds लगेंगे. ठीक है. वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, फिर उसको into 2 करोगे, फिर उसको आप 180 से डिवाइड करोगे. आपने ऐसे ही 2 मिनट गवा दिए. Doing things which was ultimately not required. So always avoid doing such calculations. Okay. Right, guys, all of you, are you clear with what we have done? Yes, sir. Yes, Show sir. me a thumbs up, at least for those whose videos are not on. At least those guys, please Yes, type sir. in a thumbs up. Let me know that you exist. Let me know that you are not sleeping. Right? मालूम तो चले कि तुम्हें समझ में आया है. Thank you. Okay. Thanks, guys. So as I said, I do have a lot of other things to explain you where we come to positive work and negative work. We will do that in the coming days. In one of the class, we will again do positive work, negative work. I do not want to rush in this topic because I know for the fact कि अगर ये समझ में आ गया, this is one of the scoring area. बहुत ही आसान है. Time and work is one of the most easiest things to do.
अगर समझ में आ गया तो ये स्कोरिंग है, और अगर समझ में नहीं आया तो ये हमेशा आपको गलत आंसर देगा. Okay, so we will come back again in the coming week and connect again on closing the time and work. Right, guys? Have a great Sunday night. Have a good dinner, good sleep, and fresh start for your new week. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.